Let us see the next question. Mr. X is holding following three stocks. So the information is given that an investor is holding three securities. Number of shares have been given to us. Price of the security is given to us. And the beta of the individual security is given to us. Spot Nifty Index is 1400 and futures is 1405. Use stock index futures to decrease the portfolio beta to 0.8 and to increase the portfolio beta to 1.5. Assume 100 means the lot size is provided to us as 100. Please go through the question, all of you. Let us understand how to make calculation of the answer. There are three securities in which you have made investment. The amount of the investment is 400 into 1 lakh. That comes to 400 lakhs. 300 into 2 lakhs. That comes to 600 lakhs. 100 into 3 lakhs. That comes to 300 lakhs. So the total value of the portfolio is 1300 lakhs. Dear students, in our chapter of portfolio management, we are going to study in detail. For the time being, I am just telling you that this is the way the working is done. That's the beta of the portfolio is calculated as simple weighted average. So what we will do, यहाँ पे हम लोग proportion calculate करेंगे कि कौन से proportion में हमने investment किया है. 4/13 that comes to 0.3077. 6/13 that comes to 0.4615 and 300 upon 1300 0.2308. So हमारा approximately 30.77 funds first security में है, 46.15 second में है, 23.08 third में है. This is the weight of the individual security multiplied with the respective beta 1.10, 1.20, 1.30. और ये जो weighted average होगा, that is the beta of the portfolio. So here 0.3077 into 1.1, that comes to 0.3385. 0.4615 into 1.2, that is 0.5538. 0.2308 into 1.30, that is 0.30. So 0.3385, 5538, 0.3. So 1.1923. यानी अभी हमारा रिस्क है अप्रॉक्सीमेटली 1.1923. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि हमको हमारा रिस्क रिड्यूस करना है टू 0.8. तो विद द यूज ऑफ द इंडेक्स फ्यूचर्स हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन. आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. आई वांट यू टू राइट इन द चैट बॉक्स कि ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देंगे. तो ओनली इनफॉर्मली डिस्कसिंग, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग. वी अंडरस्टैंड दैट से enter into the transaction for sale index futures, that is a transaction in which you should enter upon to reduce the risk. कैसे किया जाएगा? value of the portfolio into beta of the portfolio minus beta required divided by futures index value into lot size. ऐसा ट्रांजैक्शन किया जाएगा. वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है? 1300 लाख है. बीटा कितना है? 1.1923 है. बीटा रिक्वायर्ड कितना है? 0.8 है. डिवाइडेड बाय फ्यूचर्स इंडेक्स वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? इट इज 1405 और लॉट साइज कितना है? 100 है.
तो यूज अ कैलकुलेटर 1.1923 minus 0.8 0.3923 into 1300 lakhs divided by 1.1405 divided by 100 once again. That comes to 362.98. बट ऑफकोर्स हम लोग फ्रैक्शन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, नहीं तो लॉट साइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. सो विल आंसर दैट से 363 कॉन्ट्रैक्ट्स इतना हम लोग सेल करेंगे. इफ समबडी हैज अ पॉइंट दैट सर मैं 362 लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इतना आंसर हम लिखते हैं, फिर बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. लेट अस आंसर फॉर द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो. उस पे लिखो beta of portfolio is simple weighted average. Full stop. It is calculated considering the proportion of funds in which investment is made and beta of a respective security. Working note number 1, calculation of beta of portfolio. Column number 1 is stock. Column number 2 is amount. Column number 3 is weight or proportion in which investment is made. Next is beta. And the last is weight into beta. That is the way the weighted average beta of the portfolio is found. So investment is made in first security, an amount of 400 lakhs. That is price of equity share is 400 into number of shares 1 lakh. Second one, that is 600 lakhs. So in that case it is 300 rupees per share into 2 lakh number of shares. Third one, in that it is 100 rupees per share into 3 lakhs, that is 300 lakhs. 400 plus 600 plus 300. Total value of the portfolio is 1300 lakhs. The weight in which the investment is made is 400 upon 1300. Next is 600 upon 1300. And the last is 300 upon 1300. So 0.3077, 4615. और फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे लॉजिकली कि टोटल इन सब का हमेशा 1 होना चाहिए. जैसे हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल वैसा ही है. तो लास्ट का वेट है ना हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेने का, दैट इज 0.2308. अगर एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे तो इससे मैच हो सकता है या तो मार्जिनल फर्क हो सकता है, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट द टोटल इज 1. बीटा इज 1.1, 1.2 एंड 1.3. बस खत्म हो गया. सो 0.3077 into 1.10.
0.4615 into 1.20, 0.2308 into 1.30. ऐसा करके हमको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है. So 0.3385, 0.5538, and 0.30. 3385 plus 5538 plus 0.3, 1.1923. That is the way beta of the portfolio is found. Now heading right down, number of contracts to be sold so that beta of portfolio reduces to 0.8. So value of the portfolio into beta of portfolio minus beta required divided by futures index value into lot size. Value of the portfolio है rupees 1300 lakhs. Beta of the portfolio है 1.1923 minus beta required है 0.8 divided by futures index value is 1405 into lot size is 100. This is the way we are required to make calculation. That is 362.98. That is 363 contracts. Again, I want B part of the question answer to be given by you. Question में ऐसा दे रखा है that use stock index futures to increase the beta to 1.5. तो यहाँ पे क्या किया जाएगा to increase the beta? Please write answer in the chat box. The very important thing that we need to understand is in order to increase the beta, हमको क्या करना पड़ेगा? We are required to enter into the transaction for purchase index. इंडेक्स बाय करेंगे ना तो रिस्क बढ़ेगा. वी अंडरस्टैंड लॉजिकली दैट से जब मार्केट बढ़ेगा ना तो हमको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में भी फायदा होगा और हमको इंडेक्स में भी फायदा होगा, और जब मार्केट कम होगा ना तो हमको दोनों में नुकसान होगा. सो यू विल बी एबल टू इंक्रीज द रिस्क इन दिस सिचुएशन बाय परचेजिंग द इंडेक्स. तो आंसर लिखिए बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का. In order to increase risk, comma, investor should buy index. With purchasing of index, comma, trader will make a gain in existing portfolio
and also in index, comma, when market increases and vice versa. Heading right down, number of contracts to be purchased. उसमें लिखो value of the portfolio into beta of portfolio minus beta required divided by futures index value into lot size. Value of the portfolio is 1300 lakhs. Beta of the portfolio is 1.1923 minus 1.50 divided by 1405 into 100. ऐसा करके नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का कैलकुलेशन किया जाएगा. 1.1923 minus 1.5 into 1300 lakhs divided by 140500. That is 284.70. That is 285 contracts. 284 लिखेंगे तो भी चलेगा. और कई बार स्टूडेंट का ऐसा बोलते हैं कि सर नेगेटिव आंसर आएगा तो परचेज, पॉजिटिव आएगा तो सेल. ऐसा हम लोग याद रख सकते हैं, ये रख सकते हो, पर मेरे को ऐसा है, मेरा सजेशन ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली रादर देन जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव से याद रखने का. तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन करना है, दैट इज सिंपल वेटेड एवरेज. उसके बाद हमको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड का कैलकुलेशन करना है बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क टू 0.8. उसके बाद हमको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज का कैलकुलेशन करना है बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द रिस्क टू 1.5. यहाँ पे एक पॉइंट जो आपके लिए नया है वो ये है, दैट्स ए बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन. पर जब हम लोग हमारा सिंपल चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, यू विल रियलाइज दैट्स देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन व्हिच वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. So this is not going to be something very difficult or this is not going to be something very strange for you to do over there, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कैलकुलेशंस ऐसे होने वाले हैं. मेरे हिसाब से नया पॉइंट ये है, लेट्स से नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी परचेज्ड in order to increase the risk to 1.5.